Mhm. Hello, guys. Good evening to all of you. I welcome you all on Unacademy, India's largest learning platform. Myself, Dr. Nidhi, I am alumni of King George Medical University, Lucknow. I am teaching you all physiology. और हम सभी जानते हैं फिजियोलॉजी का काफ़ी अच्छा वेटेज है हमारा नीट पीजी एग्जामिनेशन में। हर साल 15 to 20 क्वेश्चन फॉर श्योर रहते हैं। हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी, बेसिक है। सभी लोग बहुत ध्यान से अपनी फिजियोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। फॉर क्लियरिंग द कंसेप्ट्स ऑफ फिजियोलॉजी स्टे ट्यून टू माय लेक्चर्स। रेगुलर लेक्चर्स फॉलो कीजिए, रेगुलर एमसीक्यू कीजिए। यू विल डेफिनेटली मास्टर इन योर फिजियोलॉजी सब्जेक्ट। और डेफिनेटली आप ये 15 to 20 क्वेश्चन फॉर श्योर आप करेक्ट कर पाएंगे। बिफोर स्टार्टिंग आवर क्वेश्चन सीरीज, पहले हम अनअकैडमी की बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो अनअकैडमी में रेगुलर डाउट क्लियरिंग बैचेस होते हैं जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के डाउट क्लियर कराए जाते हैं। अनअकैडमी में रेगुलर रिवीजन बैचेस होते हैं जिसमें आपको क्विक रिवीजन कॉन्सेप्ट्स दी जाती हैं एंड बहुत सारे एमसीक्यूज कराए जाते हैं। क्विक रिवीजन कॉन्सेप्ट लास्ट मोमेंट के रिवीजन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उस समय आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने पूरे नोट्स को गो थ्रू कर सके, तो उसी मोमेंट पे आपको ये क्विक रिवीजन बहुत बेनिफिशियल होता है। गुड इवनिंग डॉक्टर रीता। और जितना ज़्यादा आप लोग एमसीक्यू करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी कंसेप्ट स्ट्रांग होती है किसी भी टॉपिक पे। आई हाईली सजेस्ट एवरीवन कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू किया कीजिए एवरीवन। अनअकैडमी ने न्यूली लॉन्च किया है अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। If you are unable to make the preparation strategy, you can go for the iconic subscription. Iconic subscription में क्या होता है, आपको एक personalized coach मिलता है। He will guide you to make your preparation strategy. सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है वो देख लेते हैं। अनअकैडमी में डेली लाइव क्लासेस होती है। लाइव क्लासेस का बेनिफिट ये होता है कि आप अपने एजुकेटर से 1-to-1 इंटरैक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट को लाइव क्लासेस में ही क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे लाइव क्विजेस हैं। दीज ऑल आर फ्री। इसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना है एवरीवन। अनलिमिटेड आपकी प्रैक्टिस होगी, बहुत एमसीक्यू है गाइस। और डेली डेली आप क्लास फॉलो करेंगे, यू विल हैव अ स्ट्रक्चर शेड्यूल इन योर प्रिपरेशन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का ये बेनिफिट होता है कि आपको एक पर्सनलाइज कोच मिलता है। ही विल गाइड यू, ही विल हेल्प यू इन मेकिंग स्टडी प्लानिंग एंड बूस्टर सेशन। ही विल गिव यू द पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस। After taking subscription, you will get a study material. After every lecture, you can download the PDF and revise as many time as you can. Everyone. और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप अनअकैडमी की लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रेप लैडर के रिकॉर्डेड वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हैं। So if you want to see the prep ladder video also, you can go for the iconic subscription. ठीक है गाइज। सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो सब्सक्रिप्शन की फीस बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत ही ज़्यादा स्कीम्स है इसमें। आगे हम बात करेंगे। बिफोर कि आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। बहुत सारी क्लासेस हैं यहाँ पे, बहुत सारी फ्री भी हैं, कुछ पेड क्लासेस हैं, प्लस क्लासेस आर पेड क्लासेस। तो उसको अवेल करने के लिए पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, दैट इज नीट पीजी। इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, प्लस कोर्सेज आर देयर, दे आर फ्री कोर्सेज, देयर आर स्पेशल क्लासेस, दीज ऑल आर फ्री। आप इससे वीडियोस देखिए, इससे लेक्चर्स देखिए, you will definitely see the contents out here that is absolutely free। ठीक है। अगर आप फ्री कोर्सेज देखते हैं उसके बाद आप लीजिए प्लस का कोर्सेज। प्लस कोर्सेज के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो सब्सक्रिप्शन मल्टीपल स्कीम में है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। आप 1 मंथ का ले सकते हो, 3 मंथ्स का ले सकते हो, 6 मंथ का ले सकते हो, 1 ईयर का ले सकते हो, 2 ईयर का ले सकते हो।
बट 1 year इज इनफ फॉर योर प्रिपरेशन. आई वुड हाईली सजेस्ट एवरीवन कि आप 1 year का सब्सक्रिप्शन लें. अगर आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट पीजी के लिए, तो 1 year इज इनफ. गुड इवनिंग डॉक्टर अम्बुज. हमारा 1 year की सब्सक्रिप्शन की फीस होती है 22,500 एंड 2 year की फीस है 27,000. अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप डेफिनेटली 2 year का सब्सक्रिप्शन लें. सब्सक्रिप्शन फीस देखिए काफ़ी कम है एज कंपेयर टू 1 year. ठीक है, केवल 27,000 में आपको 2 year का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. और उसके बाद जब आप मेरा रेफरल कोड लगाते हैं, दैट इज डॉक्टर निधि, तो इसके बाद आपको इसमें 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा एंड इट विल कम अराउंड 20,000 एंड दिस 2 year सब्सक्रिप्शन विल कम अराउंड 25,000. ठीक है, और भी ज़्यादा इकोनॉमिकल हो गया आपके लिए. ठीक है, पेमेंट का मोड डिफरेंट मोड अवेलेबल है, आपको जो सूट करे वो आप ऑप्ट कर सकते हैं. ईएमआई ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल देयर. ठीक है एवरीवन, लास्टली ना टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और ये पेज है t.me/नीट फिजियोलॉजी. इसे फॉलो कीजिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी क्लास. And if you have any query, you can post in this page. I will definitely reply you back, everyone. पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है एवरीवन. और आप अनअकैडमी पे जाके अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं. मेरे पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट अनअकैडमी ऐप पे पहुँच जाएंगे. वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए सो दैट मैं जो अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस लेती हूँ, जो लाइव क्लासेस चलती हैं, जिसमें प्लस क्लासेस भी हैं, कुछ फ्री क्लासेस भी हैं, उसे भी आप देख सकें एवरीवन. सो फॉलो मी आउट देयर ऑल्सो. ठीक है एवरीवन, नाउ स्टार्ट आवर क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज surfactant production in lung starts at 28 week, 32 weeks, 34 weeks and 36 week. ठीक है everyone, answer this question. Good evening Dr. Akriti. काफी बार रिपीट हुआ है, ऑल इंडिया में 2004 में आया है, 14, 13, कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. Very good, Dr. Akriti. Surfactant production starts at 28 week. ठीक है, clear? Now coming to the next question. Surfactant is produced by type 2 pneumocytes, type 1 pneumocytes, macrophages, endothelial cells. ये भी काफी बार repeat हुआ है question. Everyone answer this question. Surfactant is produced by type 2 pneumocytes, type 1 pneumocytes, macrophages, endothelial cells. Everyone answer this question. Surfactant is produced by type 2 pneumocytes. ठीक है, चलो next question करते हैं. Now coming to the next question. Surfactant is made up of. ठीक है, in human body the action of surfactant is done by. ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, एम्स में इवन 2 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. Surfactant is made up of fibrin, mucoprotein, phospholipid and protein, fibrinogen. Everyone. मेजर कंपोनेंट जो सर्फेक्टेंट का होता है दैट इज फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स.
ठीक है, इसमें जो प्रोटीन होते हैं सर्फेक्टेंट प्रोटीन A, B, C, D, these four are surfactant proteins. ठीक है, फॉस्फोलिपिड, उसमें मेजर जो फॉस्फोलिपिड होता है दैट इज लेसिथिन. ठीक है, लेसिथिन, स्फिंगोमाइलिन इज आल्सो देयर. ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर सर्फेक्टेंट. ठीक है, आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. मेन पार्ट ऑफ सर्फेक्टेंट इज फॉर्म बाय. ऑप्शन ए डाइपाल्मिटॉल फॉस्फेटिडाइल कोलीन. ऑप्शन बी इज फॉस्फेटिडाइल इन ऑसिटॉल. ऑप्शन सी इज डाइपाल्मिटॉल सेफालिन. ऑप्शन डी इज डाइपाल्मिटॉल सेरीन. ठीक है, everyone answer this question. The main component of surfactant is formed by. The major component of surfactant is. It is dipalmitidol, phosphatidyl choline or lecithin. ठीक है, the major component is our protein component and lipid component. In lipid, the major lipid is lecithin and sphingomyelin. Lecithin is also known as dipalmitidol phosphatidyl choline. क्लियर है सर्फेक्टेंट का मेजर कंपोनेंट क्या है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. काफी अच्छा क्वेश्चन है. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. Pulmonary surfactant. Option A is secreted from the 26th week of gestation and maintain the minimum alveolar integrity. Option B is in hyaline membrane disease deficiency occur. Option C is therapeutic application seen. Option D is abundant secretion in bronchoalveolar carcinoma. Option E is it is mucin and secreted by type 1 pneumocytes. ठीक है, सभी ने ऑप्शन पढ़ लिया. Everyone answer this question. Pulmonary surfactant. Everyone. Option 1 A क्या है? It is secreted from 26th week of gestation. True. It maintain the minimum alveolar integrity. Surfactant क्या करता है? Surfactant prevent the lung alveoli to collapse by disrupting its water layer. So this statement is also true. In hyaline membrane disease deficiency occurs. जब gestational diabetes मदर को हो जाती है उस केसेस में हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज होती है. इस हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज का रीजन क्या है? देयर इज डिफिशियंसी इन प्रोडक्शन ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट. तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है. ठीक है, ऑप्शन सी है थेरापेटिक एप्लीकेशन सीन्स. ठीक है, हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज में ड्रग फॉर्म ऑफ सर्फेक्टेंट्स दी जाती है, तो थेरापेटिक एप्लीकेशन इज ऑल्सो सीन. ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट. Abundant secretion in bronchoalveolar carcinoma. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. It is mucin and it is secreted by type 1 pneumocyte. It is secreted by type 2 pneumocyte. So answer is A, B and C. Clear everyone? Now coming to the next question. Stability of alveoli is maintained by lung compliance, negative intrapleural pressure, increase in alveolar surface by the surfactant, residual air in alveoli. AIIMS 2009 में ये क्वेश्चन आया था. Everyone answer this question. The stability of alveoli is maintained by. Everyone. Stability of alveoli is maintained by.
Very good, Dr. Ruval. Increase in alveolar surface by the surfactant. ठीक है? Next question. Correct about the action of surfactant. Binds oxygen, lubricate carbon dioxide flow, make capillary surface hydrophilic, break structure of water in alveoli. AIIMS 2007 का question है everyone. Answer this question. Question समझ में आया सभी को? Correct about the action of surfactant. It bind with oxygen, it lubricate carbon dioxide flow, make capillary surface hydrophilic, break structure of water in the alveoli. Everyone answer this question. जो surfactant होता है वो क्या करता है? हमारी alveoli is lined by water molecules. ठीक है? And these water molecule exert surface tension that acts inward. ठीक है, जिसकी वजह से alveoli is about to collapse. But ये surfactant क्या करता है? It break the structure of water. Very good, Dr. Rugal. Break the structure of water. ठीक है, तो ये हमारा surface tension decrease होगा. ठीक, this is the action of surfactant. It breaks the water molecule, decreases the surface tension, and that's why it prevents the collapse of alveoli. So answer is C. Clear? Next question. Alveoli are kept dry because of surfactant, glycoprotein, buffer, Bose effect. Everyone answer this question. Alveoli are kept dry because of surfactant, glycoprotein, buffer, and Bore effect. Answer is surfactant. These surfactant break the water molecules, so alveoli are kept dry. Option है रागुल. Bose effect, Haldane effect हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको. Bose effect is the right shift of the alveolar oxygen dissociation curve. Haldane effect is left shift of oxygen dissociation curve. ठीक है, next question करें. Hyaline membrane contain. ठीक है, option A is albumin, option B is fibrin, option C is globulin, option D is WBC. ठीक है, clear? Everyone answer this question. Hyaline membrane contains albumin, fibrin, globulin, WBC. Everyone answer this question. Very good, Chandrika. It contains fibrin. Hyaline membrane contains fibrin, fibrinogen, and some necrotic debris. ठीक है, ये हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज में हमें ये 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं, फिब्रिन, फिब्रिनोजन एंड नेक्रोटिक डेब्रिस. सो आंसर इज बी. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रू अबाउट इंस्पिरेशन. Intrapleural pressure become more negative, intrapleural pressure become more positive, it remains same, initially positive then negative, no relation. ठीक है, PGI में आया हुआ क्वेश्चन है.
Everyone answer this question. True about inspiration. Very good, Dr. Chandrika. Answer is A. इंट्राप्लूरल प्रेशर रेस्टिंग कंडीशन में कितना होता है हमारा? -2.5. एट इंस्पिरेशन के बाद कितना हो जाता है? आफ्टर इंस्पिरेशन इट बिकम -6. आफ्टर एक्सपिरेशन इट अगेन कम्स टू -2.5. ठीक है, so answer is A. Intrapleural pressure become more negative. Clear? ठीक है, next question. Intrapleural pressure is negative both during inspiration and expiration because intrapulmonary pressure is always negative. Thoracic cage and lung are elastic in nature. Transpulmonary pressure determine the negativity. Surfactant prevent the collapse of lung. ऑप्शन सभी ने पढ़ लिया? एवरीवन, एम्स 2005 का क्वेश्चन है, मई का. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. Intrapleural pressure is negative both during inspiration and expiration. Why? Everyone answer this question. Very good, Dr. Chandrika. Intrapleural pressure is negative because thoracic cage and lung are elastic in nature. तो lung की tendency होती है to collapse. ठीक है, और thoracic cage move outward. इस वजह से intrapleural pressure is negative all time. ठीक है, clear? Next question. Intrapleural pressure is negative because option A is chest wall and lung recoil in opposite direction to each other. Transpulmonary pressure is negative. Intrapulmonary pressure is negative. Option D is pulmonary collapse is prevented by surfactant. ठीक है, सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया? Everyone answer this question. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, आई गेस सभी को पता है. Intrapleural pressure is negative because very good, Dr. Ragul. Dr. Chandrika. Answer is A. Chest wall and lung recoil in opposite direction. So intrapleural pressure is negative. Clear? Next question. Negative intrapleural pressure is due to. काफी अच्छा क्वेश्चन है. Everyone answer this question. Option A is uniform distribution of surfactant over alveoli. Option B is negative intra-alveolar pressure. Option C is absorption by lymphatics. Option D is presence of cartilage in the upper airway. ठीक है, सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया? Everyone? Everyone answer this question. Negative intrapleural pressure is due to. Very good, Dr. Chandrika. It is by absorption of lymphatics.
जो नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर है दैट इज ड्यू टू द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग एंड ड्यू टू द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ चेस्ट वॉल. ठीक है, इसकी वजह से ये नेगेटिव होता है, बट इट इज मेंटेन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लिम्फेटिक. जो भी एक्सेस लिम्फेटिक प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, दिस इज अब्सॉर्ब एंड द नेगेटिव प्रेशर inside the intrapleural area is maintained. ठीक है, so answer is C. Very good, Dr. Ragul, Dr. Chandrika. Now coming to the next question. True about normal expiration. At the end of normal expiration, air in lung is expiratory reserve volume. Chest wall has a tendency to move outwards, which is balanced by inward recoil of alveoli. In inspiration, pleural pressure is equal to alveolar pressure. Option D is muscles that elevate the chest cage are classified as muscles of expiration. ठीक है, क्वेश्चन अभी ने पढ़ लिया. Now everyone answer this question. PGI November 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है. Which of the following statement is true for normal expiration? Option A, at the end of normal expiration, air in lung is expiratory reserve volume. Very good, Dr. Ragul. Answer is B. क्योंकि first statement is saying at the end of normal expiration, air in lung is functional residual capacity. It is equals to expiratory reserve volume and residual volume. ठीक है, ऑप्शन सी था इन एक्सपिरेशन प्लूरल प्रेशर इज इक्वल टू एल्वेलर प्रेशर. कभी भी एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन में एल्वेलर प्रेशर और प्लूरल प्रेशर कभी भी इक्वल नहीं होता है. एवरी टाइम इट इज नो इक्वल. क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं प्लूरल प्रेशर की, तो एट रेस्ट इट इज 0.25. During inspiration, it become -6, and at the end of expiration, it become -2.5. ठीक है, और जब हम बात करते हैं alveolar pressure की, alveolar pressure at the rest is 0. At the start of inspiration, it become -1. At the end of expiration, it again becomes 0. And at the start of expiration it become +1, and at the end of expiration it again becomes 0. ठीक है, तो किसी भी टाइम पे alveolar pressure is not equal to pleural pressure is not equal to the alveolar pressure. So option C is also wrong. Muscles that elevate the chest cage are classified as muscles of inspiration. So option D is also correct. The answer is B. Clear? Clear, Dr. Chandrika? Now coming to the next question. A person is having normal lung compliance and increased airway resistance. The most economical way of breathing for him is rapid and deep, rapid and shallow, slow and deep. Option D is slow and shallow. ठीक है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. Thank you so much, Akriti. Person is having a normal lung compliance and increased airway resistance, the most economical way of breathing for him. So answer is our slow and deep breathing. Lung compliance is normal but airway resistance is increased. तो उस केसेस में हमारा स्लो ब्रीदिंग एंड डीप ब्रीदिंग वर्क्स. जब लंग कॉम्प्लायंस डिक्रीज होता है, इन केसेस वे लंग कॉम्प्लायंस इज डिक्रीज, उस केस में रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग वर्क्स. रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग वर्क्स.
ठीक है, बट इस केस में लंग कॉम्प्लायंस इज नॉर्मल, but there is increased airway resistance. So slow and deep breathing will work best here. Clear everyone? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नॉर्मल लंग कॉम्प्लायंस है, एयरवे रेजिस्टेंस इंक्रीज है, सो द मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ ब्रीदिंग इज स्लो एंड डीप. In cases where lung compliance is decreased, rapid and shallow breathing works most economical. Clear? Now coming to the next question. Difference in trajectory between inspiratory loop and expiratory loop in the curve is due to. ठीक है, ये हमारा इंस्पिरेटरी प्रेशर वॉल्यूम लूप है, ये हमारा एक्सपिरेटरी प्रेशर वॉल्यूम लूप है. ठीक है, the option A is difference in alveolar pressure during inspiration and expiration. Option B is difference in concentration of surfactant during inspiration and expiration. ठीक है, option C is difference in airway resistance during inspiration and expiration. Option D is inspiration is active, expiration is passive. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चलो आंसर करो एवरीवन. आंसर इज बी. ये लूप में जो ट्रैजेक्टरी दिख रही है आपको, वो डिफरेंस ये क्या शो करता है? दिस इज हिस्टेरेसिस. और ये क्यों है? इट इज बिकॉज द कॉम्प्लायंस चेंज इन it is because the compliance change during inspiration is not during inspiration is not equals to expiration changes. एक्सपिरेशन में जो हमारा कॉम्प्लायंस चेंज है दैट इज नॉट टैलिंग विद द कॉम्प्लायंस चेंज इन इंस्पिरेशन. दैट्स वाई ये हिस्टेरेसिस हमें यहाँ मिलता है. ठीक है, और ये कॉम्प्लायंस चेंज इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, हमारी एल्वेलाई स्मॉल होती है. स्मॉल एल्वेलाई होती है तो सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? ज्यादा होता है. ठीक है, सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन उस समय ज्यादा होता है तो वो सरफेस टेंशन को ज्यादा रिड्यूस करता है. ठीक है, तो उस समय कॉम्प्लायंस इज मोर. और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन क्या होता है? एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपिरेशन हमारी एल्वेलाई ऑलरेडी लार्ज होती है, तो उस केस में कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इज लेस, तो वो सरफेस टेंशन को लेस रिड्यूस करता है. उस समय कॉम्प्लायंस इज लेस. ठीक है, क्लियर? आंसर इज बी. क्लियर है? डिफरेंस इन ट्राजेक्टरी बिटवीन इंस्पिरेटरी लूप एंड एक्सपायरेटरी लूप क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ कॉम्प्लायंस चेंज इन इंस्पिरेशन इज नॉट इक्वल टू कॉम्प्लायंस चेंज इन एक्सपिरेशन. और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट चेंजेस. क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Now coming to the next question. The normal compliance of lung is 200 ml per centimeter of water, 800 ml per centimeter of water. Option C is 500 ml per centimeter of water. Option D is 100 ml per centimeter of water. Okay, clear? Now everyone answer this question. The normal compliance of lung is everyone answer this question.
The normal compliance of lung is 200 ml per centimeter of water. ठीक है, next question करें. Now coming to the next question. Ragul, it is a database question. आपको याद रखना है compliance of lung is 200 ml per centimeter of water. Database question है, आपको मगअप ही करना होगा anyways. ठीक है, tidal volume is calculated as inspiratory capacity minus inspiratory reserve volume. Option B is total lung capacity minus reserve volume. Option C is functional residual capacity minus residual volume. Option D is vital capacity minus expiratory reserve volume. ठीक है, ऑल इंडिया 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. Tidal volume is calculated by. हाँ डॉक्टर अंबुज, आपको कुछ डेटाज याद करने होते हैं. हमेशा डेटाबेस कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर होते हैं. Tidal volume is inspiratory capacity minus inspiratory reserve volume. So answer is A. ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रिजर्व वॉल्यूम. तो इसमें तो हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी सब आ जाती है. ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, इट विल गिव एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. वाइटल कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विल गिव इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम. तो आंसर इज ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Volume of air that is taken in and given out during normal respiration is referred as. ठीक है, inspiratory reserve volume, tidal volume, expiratory reserve volume, vital capacity. काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन. Everyone answer this question. Volume of air that is taken in and given out during normal respiration is referred as. Is referred as tidal volume. Volume of air that is taken in and given out during normal respiration is tidal volume. Now coming to the next question. Functional residual capacity is volume remaining after forced expiration, tidal volume plus volume inspired forcefully, volume remaining after normal expiration. Option D is tidal volume plus volume expired by forced expiration. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया एवरीवन? एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कीजिए एवरीवन. Functional residual capacity. Answer is the volume remaining after normal expiration. Functional residual capacity क्या होता है? It is equals to expiratory reserve volume plus residual volume. ठीक है, तो during forced expiration we all also expiring expiratory reserve volume. So after forceful expiration the volume lungs में जो बच जाता है that is residual volume. So option A is wrong. Tidal volume plus volume inspired forcefully. तो ये आ जाएगा हमारा tidal volume plus inspiratory reserve volume. ठीक है, तो ये हमारा functional residual capacity नहीं होती है. Functional residual capacity is expiratory reserve volume plus residual volume. So answer is C. Clear?
नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Now coming to the next question. Functional residual capacity of lung is defined as. ठीक है. Volume expired after normal expiration. Option B is volume remaining after forced expiration is equals to expiratory reserve volume plus residual volume is equal to tidal volume plus volume inspired forcefully. PGI में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है. Functional residual capacity of a lung is defined as. Everyone answer this question. ठीक है, easy है. It is expiratory reserve volume plus residual volume. Clear? Next question. Total lung capacity depend on size of airway, closing volume, lung compliance, residual volume. ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है एवरीवन? ऑल इंडिया 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. टोटल लंग कैपेसिटी डिपेंड ऑन. टोटल लंग कैपेसिटी हमारी जो डिपेंड करती है वो लंग कॉम्प्लायंस पे डिपेंड करती है. इफ लंग कॉम्प्लायंस इज मोर तो हमारी लंग कैपेसिटी विल बी मोर. इफ लंग कॉम्प्लायंस विल बी लेस तो हमारी लंग कैपेसिटी भी लेस होगी. तो आंसर इज सी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Regarding pulmonary function test, all are true except. ठीक है, क्वेश्चन सभी ने पढ़ा. Except option A is total lung volume increases in emphysema. Option B is compliance decreases in interstitial lung disease. Option C is compliance is total lung distensibility. Option D is FEV1. It is a force expiratory rate at 1 minute. एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी लोग ऑप्शन ध्यान से पढ़िए. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. Regarding pulmonary function test, all are true except. Everyone answer this question. ऑप्शन ए है टोटल लंग वॉल्यूम इंक्रीजेस इन एम्फाइजेमा. एम्फाइजेमा में हमारा क्या होता है? कॉम्प्लायंस ऑफ लंग इंक्रीजेस, सो टोटल लंग वॉल्यूम विल इंक्रीज. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी है कंप्लायंस डिक्रीजेस इन इंटरस्टिशियल लंग डिजीज. ये भी करेक्ट है. इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में हमारा कॉम्प्लायंस डिक्रीज होता है. एंड कॉम्प्लायंस इज टोटल लंग डिस्टेंसिबिलिटी. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. FEV1, it is a force expiratory rate at 1 second, not 1 minute. So answer is D. Very good, SK Clasher. Answer is D. Now coming to the next question. Which of the following is used to measure the resistance to a small airway or best denote airway resistance? ठीक है, काफी बार रिपीट हुआ है एम्स में भी. तो एवरीवन ध्यान से ऑप्शन पढ़िए. ऑप्शन ए इज वाइटल कैपेसिटी. ऑप्शन बी इज FEV1. ऑप्शन सी इज मैक्सिमम मिड रेस्पिरेटरी फ्लो रेट. ऑप्शन डी इज क्लोजिंग वॉल्यूम. ठीक है, सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया. नाउ एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. Which of the following is used to measure the resistance to small airway?
Everyone answer this question. Maximum mid-respiratory flow rate is the best way to measure the resistance in a small airway. अगर airway में resistance होगा तो maximum mid-respiratory flow rate will be lesser. This is the most important parameter to denote the airway resistance. So answer is C. Clear everyone? Next question. Critical closing volume is volume at the end of forceful expiration, volume at end of forceful inspiration, volume remaining after functional residual capacity is measured. Option D is close to residual volume. ठीक है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है क्रिटिकल क्लोजिंग वॉल्यूम. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. Critical closing volume is volume at the end of forceful expiration, volume at the end of forceful inspiration, volume remaining after functional residual capacity is measured, close to residual volume. Critical closing volume क्या होता है? At the end of expiration क्या होता है? कुछ volume of air is entrapped in the alveoli. This is called as closing volume. ठीक है? And it is close to our residual volume. So answer is D. Clear everyone? Now coming to the next question. Pulmonary function abnormality in interstitial lung disease includes all of the following except. ठीक है? Clear? Option A is reduce vital capacity. Option B is reduce FeV1 upon force vital capacity ratio. Option C is reduce diffusion capacity. Option D is reduce total lung capacity. ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एम्स 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. Pulmonary function abnormality in interstitial lung disease include all of the following except. Anyone? Reduce FeV1 upon force vital capacity ratio. Interstitial lung disease में हमारा compliance is less. ठीक है, लंग की alveoli expand नहीं कर सकती है due to this interstitial lung disease, so compliance is less. ठीक है, तो डिफ्यूजन कैपेसिटी भी लेस होती है, वाइटल कैपेसिटी भी रिड्यूस होती है, टोटल लंग कैपेसिटी भी रिड्यूस होती है, इसमें फंक्शन फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी रिड्यूस होती है. सो दिस टिफैनी इंडेक्स FeV1 upon force vital capacity, this is known as Tiffany index. ठीक है, this increases in cases of interstitial lung disease. ठीक है, obstructive lung disease में this Tiffany index, interstitial lung disease में क्या होगा? This increases, Tiffany index increases, and in obstructive lung diseases this Tiffany index decreases. ठीक है, everyone remember this point about Tiffany index, काफी बार क्वेश्चन आया है इससे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Now coming to next question. Set of data which correctly define restrictive lung disease is. ठीक है, restrictive lung disease. ठीक है, option E is increase FRC, increase compliance of lung. Option B is increase Tiffany index, decrease compliance of lung. Option C is decrease Tiffany index, decrease compliance of lung. Option D is increase total lung capacity, reduce residual volume. ठीक है, ऑप्शन सभी ने पढ़ लिया एवरीवन?
Now answer this question. Which of the data correctly define restrictive lung disease? अभी just हमने discuss किया. Anyone answer this question. Restrictive lung disease में क्या क्या changes होते हैं? In restrictive lung disease, compliance decreases and Tiffany index increases. So answer is B. Clear? Now coming to the next question. In upper airway obstruction, all of the following changes are seen. ठीक है, upper airway obstruction में all of the following changes are seen except decreased maximal breathing capacity, decreased residual volume, decreased FEV post expiratory volume, decreased vital capacity. All India 2009 का क्वेश्चन है. Everyone answer this question. In upper airway obstruction, all of the following changes are seen except residual volume decrease. Residual volume में कोई changes नहीं होते हैं. Upper airway obstruction है, breathing capacity will reduce, FEV decrease, vital capacity decrease, but there is no change. Residual volume in fact increases in emphysema. ठीक है, so answer is B. Clear everyone? Now coming to the next question. Pulmonary function changes seen in emphysema. ठीक है, pulmonary function changes seen in emphysema is increased total lung capacity, decreased residual volume, increased expiratory flow rate in 1 second, increased vital capacity. Everyone answer this question. In All India 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है. In emphysema, pulmonary function changes seen in emphysema. Pulmonary function changes seen in emphysema are total lung capacity increases in emphysema, compliance increases, so total lung capacity हमारी increase होती है in cases of emphysema. So answer is A. Clear? Next question करें. Now coming to the next question. In body plethysmography, a person is asked to expire against a closed glottis. What will be the changes in the pressure at the level of lung and box? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है. Option A is increase in both. Option B is decrease in both. Option C is increase in lung but decrease in box. Option D is decrease in lung, increase in box. All India 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है. Everyone answer this question. Body plethysmography में pressure changes at the level of lung and box are asked. Everyone answer this question. प्लेथिस्मोग्राफी में क्या करते हैं हम, जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज मेजर्ड
by body plethysmography. इसमें क्या करते हैं? A person is asked to inspire and expire in a closed chamber. फिर pressure changes and volume changes लेते हैं और theory of equity कि pressure और volume mass remain conserved इससे निकालते हैं. तो अभी हम ये पूछा है क्वेश्चन में pressure and changes in lungs and box when the person is expiring. ठीक है. Boyle's law state that pressure is inversely proportional to volume. तो जब person expire कर रहा है तो volume in the lung will decrease. ठीक है. So pressure in the lung will increase. ठीक है. And during expiration क्या होगा? Volume in the box will increase. So pressure in the box will decrease. So answer is C. Clear? Everyone clear here? Now coming to next question. Vital capacity is sum of inspiratory reserve volume, tidal volume and expiratory reserve volume. Option B है tidal volume, inspiratory reserve volume and residual volume. Option C है expiratory reserve volume, inspiratory reserve volume and residual volume. Option D is residual volume, inspiratory volume and expiratory volume. ठीक है, सभी ने ऑप्शंस पढ़ लिए. Now everyone answer this question. Vital capacity is summation of everyone answer this question. Vital capacity क्या होता है? Everyone, the volume of air that can be expired after deep inspiration. तो वो क्या हो जाएगा? Inspiratory reserve volume plus tidal volume plus expiratory reserve volume. So answer is A. Clear everyone? Now coming to the next question. Pyrometer measures tidal volume, ठीक है, total lung capacity, expiratory reserve volume, functional residual capacity, ठीक है, inspiratory reserve volume. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस काफी बार आए हैं. स्पायरोमीटर से हम कौन कौन से वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, कौन कौन सी कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं. ठीक है, एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. पीजीआई 12 में आया हुआ क्वेश्चन है. Pyrometer measures हम स्पायरोमीटर कौन कौन से वॉल्यूम एंड कैपेसिटी हम मेजर कर सकते हैं. एवरीवन, from a spirometer we can measure the tidal volume, we can measure the expiratory reserve volume, we can measure the inspiratory reserve volume. Functional residual capacity cannot be measured because residual volume cannot be measured from the spirometers. ठीक है, इसीलिए टोटल लंग कैपेसिटी भी हम मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमीटर से. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Spirometry can demonstrate and measure all of the following except. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट रिपीट है. कितनी बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन? ऑल इंडिया में, एम्स में, सब में काफी बार रिपीट हुआ है. ऑप्शन ए इज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी. ठीक है, स्पायरोमीटर कैन डेमोन्स्ट्रेट ऑल एक्सेप्ट. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है. Pyrometer can demonstrate and measure all of the following except.
Everyone answer this question. Residual volume cannot be measured from the spirometer. ठीक है? Next question. Routine spirometry can't estimate. ठीक है? Routine spirometry can't estimate. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, पीजीआई में 2 बार रिपीट हुआ है यही क्वेश्चन. Everyone answer this question. Everyone, spirometry से we cannot estimate. We cannot estimate our residual volume from a spirometry. So we cannot estimate the FRC from the spirometry. ठीक है? Clear? Next question करें. Next question. Nitrogen washout method is used for estimating dead space volume, functional residual capacity, tidal volume और diffusion capacity. PGI 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है. Everyone answer this question. Nitrogen washout method is used for estimating dead space volume, estimating functional residual capacity, estimating tidal volume, estimating diffusion capacity. Everyone answer this question. Nitrogen washout method is used to measure the functional residual capacity. Functional residual capacity measure करने के लिए 3 techniques है. Helium dilution method, ठीक है, nitrogen washout method and body plethysmography. These 3 methods are used to measure the functional residual capacity. डेड स्पेस वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारा जो होता है दैट इज सिंगल नाइट्रोजन ब्रीथ मेथड. ठीक है, इसको हम फाउलर्स मेथड भी कहते हैं. इज ऑल्सो नोन एज फाउलर्स मेथड. ठीक है, सिंगल नाइट्रोजन ब्रीथ मेथड. और बोस इक्वेशन से भी हम निकालते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम. ठीक है, functional residual capacity is measured from helium dilution method, nitrogen washout method and body plethysmography. Clear everyone? Next question देखते हैं. Now coming to the next question. The given graph likely depict which of the following disease? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है एवरीवन, ध्यान से कीजिए. ऑप्शन ए इज ब्रोंकियल asthma, ऑप्शन डी इज emphysema, option C is interstitial lung disease, option D is normal study. AIIMS 2015 का क्वेश्चन है. This is the normal graph and this given graph is depicting which disease? ठीक है, क्लियर? सभी लोग इसका आंसर कीजिए. Everyone answer this question. The given graph is depicting which disease? Pressure volume changes दिखाया है. This is graph of compliance. Compliance क्या होता है? Change in volume for given change in a pressure. तो ये जो given graph है that is compliance graph. ठीक है, ये normal graph है and this given graph is depicting the low compliance. For given change in a pressure there is less change in a volume. So it is depicting the low compliance graph. और हमारा interstitial lung disease में compliance is less.
So the given graph is of interstitial lung disease. Clear everyone? ठीक है, सभी को समझ में आया आज के क्वेश्चंस? आज का सेशन यही एंड होता है. होप यू लाइक द सेशन. इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू गिव अस लाइक. This will motivate us to give you all more and more. Thank you so much for joining everyone. Lastly, subscribe कीजिए channel को, that is Unacademy NEET PG, so that you will get the notification of every classes. Don't forget to hit the bell icon. बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी. डू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम. टेलीग्राम पे जाके ये पेज है t.me/neetphysiology. इसे फॉलो कीजिए. यहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगी सारे कुछ लेक्चर्स के बारे में. प्रायर नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. इन केस कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं. अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कीजिए सो दैट यू कैन अटेंड मोर एंड मोर क्लासेस. सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं एवरीवन. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. लास्टली, रेगुलर रिवाइज करते रहिए अपने टॉपिक को, सो दैट वी कैन डेफिनेटली क्रैक आवर एग्जाम विद गुड रैंक. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. लास्टली, मेरा रेफरल कोड दैट इज डॉक्टर निधि अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें. मेरा रेफरल कोड यूज करते ही आपको अपने सब्सक्रिप्शन में 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा एवरीवन. Thank you so much for joining.